Yeah, so I'm kind of 8 minutes early, I think, but 7 or 8 minutes or whatever. And मेरा वर्टिकल स्ट्रीम तो अजीब ही लग रहा है भाई, पता नहीं क्या इसको कौन ही देखेगा वर्टिकल स्ट्रीम को भाई. आह, ठीक है. So what I'm gonna do is check if everything is fine right now. First, first and foremost. So I'm kind of 8 minutes early, I think, but 7 or 8 minutes. And मेरा vertical stream तो अजीब ही लग रहा है भाई, पता नहीं first and foremost. So I'm kind of 8 minutes early, I think, but 7 or 8 minutes. And मेरा vertical stream तो अजीब ही लग रहा है भाई, पता नहीं first and foremost. Yeah, everything seems fine as of now. Keep my stuff. And since we are what 4 5 minutes early, wait, I have to check if my stream is public. Yes, it is. As life. So what I'm gonna do is take the link and share it with people right now. So mm, there is Kunal. अरे बाया कैसा है? स्ट्रीम सही चल रहा है क्या? अरे कुजे सब डिलीट क्यों किया भाई मैसेज मतलब. डैम, यस सर यस सर. अबे मेरा माउस बीच में आ रहा है अभी. फैम ये लोग बोलते हैं तो तूने अभी जस्ट बोला है भाई फैम. शर्म आती है शर्म. हम्म?
अबे यार मेरे को ये पहले कर लेना चाहिए था, पता है क्या? शुड हैव शेयर्ड द लिंक लिंक पहले ही, इसलिए तो डिलीट करा। हम्म, पर तेरे ट्रेसेस रहेंगे मेरे इस पे, रिप्ले है अवेल। वैसे स्ट्रीम लैग वैग नहीं हो रही है ना? नहीं, ओके। वीएक्सी मैटर अच्छा है, हाँ ले ले, क्यों नहीं है भाई अच्छा। और वैसे गाने वाने का ज़्यादा साउंड नहीं है ना भाई, मैंने सेटअप वेटअप नहीं करके रखा हुआ है क्योंकि कुछ भी मेरे इस पे अभी सेटअप नहीं हुआ था। सो नॉट श्योर अबाउट ऑडियो ऑडियो। मेरा आवाज़ कम आएगा क्योंकि मेरा माइक थोड़ा दूर है मेरे से अभी। नहीं है, गाना वाना सही से आ रहा है ना, मतलब आवाज़? वो पीछे मैंने नॉन नॉन नो कॉपीराइट कुछ तो लगा दिया है भाई, मेरे को नहीं पता वो क्या है। आई हैव नो क्लू। एक स्टोरी भी लगा देता हूँ भाई। रील नहीं भाई, स्टोरी स्टोरी। यस, बूमरैंग। अबे लिंक 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 लिंक। लिंक कहाँ है भाई? ये लो, यूट्यूब आ जाओ भाई। ये लो एंड गुड, तेरी अभी ठीक है आवाज़ आ रही है, आवाज़ ओके। यार मैंने कितना टाइम हो गया भाई पीसी पे ऐसा गेम नहीं खुला, इट फील्स सो वियर्ड भाई। ऐसा इतना वियर्ड वियर्ड सा ये आ रहा है ना मेरे को, ऐसा वाइब्स। इसलिए भाई। और एक तो मैंने ऐसा सेटअप इतना ऐसा ये करके किया ना भाई, क्या बोलते हैं, पूरा ऐसा गिचमिट गिचमिट। ये 400 सब, लेट्स गो। 398 से 400 हो गए 2 साल बाद। भाई साहब, 2 साल। दो, हाँ आई थिंक 2 साल हो गया भाई इस। वी वर ऑन 400 आई थिंक। अबे मैंने लिटरली अभी स्क्रीन, ओके एक सेकेंड। 2 साल पहले आई थिंक वी वर स्टक एट 398 आई थिंक। चलम नंगा हो। 50,000 वेज इंस्टेंट। देख रहा है, ये देख रहा है, मेहनत चल रही है भाई।
इंस्टेंट 50,000 सुपर चैट। एक एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगा, ऐसे इधर नोटिफिकेशन बजेगा, 2 सेकंड में नंगा हो जाऊंगा। छी, और इतना इतना कम? हाँ भाई, सस्ता हूँ मैं, थोड़ा भेजना भाई। इतना कम? भाई तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है यार वैसे? अभी मैं थोड़ी देर के लिए वेट करूंगा, लेट्स सी क्या क्या सीन है क्या नहीं है, फिर उसके बाद। एक तो यार, ओके ओके चल रहा है, ओके। अबे कैटेगरी कार्स एंड व्हीकल्स क्यों हो गई है मेरी? व्हाट? मैंने एजुकेशन किया था भाई, वो तो अच्छा वो चेक किया मैंने। मेरा कैटेगरी में कार्स एंड व्हीकल्स था। क्या चला रहा हूँ मैं? कार्स। मैं अभी किन किन लोगों को भेजूँ भाई? आई थिंक देयर वाज वन मोर गाय जिसको। ओह यस। अब परफ्यूम से इंडियन एलिगेशंस कम। अब परफ्यूम से इंडियन एलिगेशंस कम होते मतलब? व्हाट डू यू मीन? रुको, अपने ग्रुप में डालता हूँ मैं। सरपक्राइब, लाइक, शेयर, शेयर एंड सरपक्राइब। अब परफ्यूम से इंडियन एलिगेशंस कम होते, वो गंदा स्मेल करने वाले इंडियन, ओ हो। अच्छा, मतलब वो एलिगेशंस कम हो जाएंगे, ओके ओके ओके। भाई, कहाँ से कहाँ का कंटेक्स्ट ढूंढ के लाया है भाई तू? देख, सरपक्राइब सरपक्राइब। यार चैट में लोग तो हैं स्ट्रीम पे, आई मीन, सो हाउ अबाउट वी चैट अ बिट, आई मीन, शर्मा मत भाई, जो भी है, देयर आर फ्यू पीपल। इसको मैं बनाएंगा। चालू कर दूं क्या यार बनाना? बट अभी तक लोग आए नहीं है।
Should I wait for a while? टेंस और वो चाहिए, अबे नहीं यार, क्या ही बोलूँ भाई मैं। भैया वो अभी रिवील कब देखेंगे भाई? हम्म, इतना ड्रामा करते ये लोग, टेंशन फ्राइडे ब्रोकअप। आई मीन भाई उनका फैन बेस ही उतना बड़ा है रे, समझ रहा है तू? उसका फैन बेस ही इतना बड़ा है कि फोमो तो होने ही वाला है सबको। फोमो तो वही सबको होने वाला है, तगड़ा वाला, क्योंकि उनका जो, क्या बोलते हैं, एक 3-4 साल तक भाई उन लोगों ने स्ट्रीम पे मचाया है रे। तो इट्स लाइक इनएविटेबल। हाय चेज, सॉरी। बिग फैन भाई, सेम बिग फैन भाई। पढ़ा ही नहीं यार मैंने टेक्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी। वेलकम टू द स्ट्रीम मैन। क्रिंज किड्स, 6 साल, हाँ ट्रू 6 साल, यस। ट्रू 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 6 साल, यप। आई मीन स्टार्टिंग में तो काइडे वाजंट स्ट्रीमिंग, शी वाज लाइक ऑन हिज स्ट्रीम्स कॉन्स्टेंटली, बट उसने भी चालू कर दिया था, आई थिंक 2021 के आसपास कर दिया था। हाँ तो बेसिकली 6 साल ही पकड़ के चलो, 5-6 साल तो उन लोगों ने किया है। तो इट्स लाइक, आई मीन, हाँ एक बात है कि भाई उनकी पर्सनल लाइफ है भाई, रहने दो जो भी है, उनको रहने दो, करना है करने दो। नहीं भाई सबको लगाने चीटिंग एलिगेशंस एंड ये नो। मेरे को 2 रील्स आए थे, आई थिंक 2 या 3 रील आ चुके हैं मेरे को मेरी इस पे फीड पे, कि काइडे वाज चीटिंग और समथिंग लाइक दैट। कम ऑन मैन, 1 मिनट रुकना गाइस। मैं इतना कंजेस्टेड होके बैठा हूँ ना भाई, मेरा एक तो सेटअप इतना ये है ना, मैंने इधर जो मेरी उंगली है अभी, इसके पीछे ही मैंने ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा के रखा हुआ है, और उस पर कैमरा जस्ट बिसाइड एट, मैं बैठा हुआ हूँ, और मेरे लेफ़्ट साइड पे सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, फ़ोन मेरे सामने है, एक छोटू सा पंखा है मेरे सामने, बिकॉज मेरा पंखा ये हवा नहीं दे रहा है अभी मेरे को इस साइड पे, एंड इतनी गर्मी हो रही है मैं मर जाऊँगा। एंड ये अपना सेंस स्ट्रिप्स ले लिया मैंने, बिकॉज वी हैव टू टिप every single time we make them, I mean every single time we drop something, not every single time but like after every few drops, नहीं क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप्स ही,
वो मैं सेंट स्ट्रिप्स एक एक करके डिप करूँगा ताकि वी कैन जस्ट गेस, मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है, तो हमें स्टडी होगा बेसिकली एक काइंड ऑफ कि इस पॉइंट पे हमने ये डाला, सो ऐसा. तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना स्टार्ट विद द मोस्ट ये डोमिनेंट मटेरियल्स, बेसिकली बेस नोट्स. फिर उसके बाद विल गो मूव टुवर्ड्स द टॉप धीरे धीरे करके, एक एक करके. पहले मैं जो भी सारे बेस नोट्स है वो पहले डालना स्टार्ट करूँगा. सो बेसिकली मुझे सिंपल पड़ेगा एंड लाइक बेस से टॉप ऐसा, क्योंकि टॉप नोट्स मैं अगर पहले डाल दूंगा तो वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, इंस्टेंट उड़ जाएंगे, तो मैं एवेल्यूएट नहीं कर पाऊँगा ठीक से परफ्यूम को. एंड मैं अभी चालू कर रहा हूँ बिकॉज व्हाट वी हैव बीन स्ट्रीमिंग फॉर ऑलमोस्ट 21 मिनट्स राइट नाउ एंड आई थिंक इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट. तो ये देखो ना, दिस इज वेरामॉस. दिस मटेरियल स्मेल्स मॉसी काइंड ऑफ. तो इसका एक दिस इज अ सिंथेटिक वर्जन जो परफ्यूम मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला में ही यूज़ होता है, बट पहले ओकमॉस करके एक आता था, मतलब ओकमॉस ही है, ओकमॉस का ही ये क्या बोलते हैं, एक सिंथेटिक वर्जन है. सो द थिंग इज जो ओकमॉस है उसमें बहुत डीप और दी काइंड ऑफ इसमें ये है, फैसेट्स हैं, नुआंसेस हैं, बट दिस इज़ वेरी क्या बोलते हैं, सिंथेटिक ही, मतलब बेसिकली इट्स लाइक कि भाई इसमें जो डेप्थ है वो नहीं है, जो एक क्या बोलते हैं जो रहेगा परफ्यूम जिसमें ओकमॉस है ओरिजिनल एंड इट इज़ IFRA रिस्ट्रिक्टेड. तो उसकी वजह से इशू ये होता है कि इट डज नॉट गेट यूज्ड अलॉट अभी. इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 0.01% ऑफ द होल परफ्यूम. सो उसकी वजह से people started using this stuff Veramos. इसको मैंने 10% डाइल्यूशन में रखा हुआ है अभी, 10% एज इन इसमें 1 ग्राम ऑफ रियल मटेरियल है एंड देन अदर इज अल्कोहल. हाय अनुराग, वेलकम टू द स्ट्रीम मैन. गिव मी अ सेकंड गाइस, मैंने ढक्कन गिरा दिया. सो इसका सीन ऐसा है कि ट्रायल बैचेस के लिए मुझे ये रखना पड़ता है बिकॉज आई कैन नॉट यूज़ क्या बोलते हैं नीट मटेरियल्स, मतलब जो पूरा मटेरियल है वो मैं अगर यूज़ करने बैठ गया तो मुझे अंबानी का बेटा बनना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट ये ऐसा चीप. तो आई हैव टू मेक डाइल्यूशंस सो आई कैन मेक ट्रायल बैचेस जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, तो इससे मैं ट्रायल बैच बना सकता हूँ. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेस नोट्स राइट नाउ एंड आई नो थोड़ा स्कैंकी सा सेटअप है एंड एवरीथिंग, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ. मेरे पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं है. आई डोंट हैव अ कैमरा और समथिंग सो आई कैन लाइक ऐसा सेट इट अप प्रॉपर्ली. एंड मैं कुछ चीज़ें ही रिवील करूँगा इसमें. आई एम गोइंग टू रिवील द बेस, मतलब इसमें जो मैं डालूँगा आई एम गोइंग टू रिवील द मेन, ऐसा जो परफ्यूम का जो मेन कंपोनेंट्स है, जो जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वही मैं रिवील करूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिवील दी नोट्स विच आर क्या बोलते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट्स. दिस इज़ 0.001 ग्राम का वेट स्केल. इसका नाम है अमीशी टूल्स. 200 mg वेट करता है ये टोटल. 200 mg, हाँ 200 mg नहीं 200 ग्राम वेट करता है. एंड इट इज़ 0. मतलब इस पे इफ़ यू ड्रॉप अराउंड 0.06 तभी ही ये वेट करना मतलब ये करता है, स्टार्ट करता है. उससे पहले अगर 0.02, 3, 4, 5 जो भी है तब तक वेट नहीं करता है वो. तो ये तो कोई सा भी स्केल ले लो वही इशू होगा, बट दिस इज़ गुड इनफ बिकॉज आई कैन वर्क ऑन माई ट्रायल बैचेस ऑन दिस. अगर मेरे को बड़ा बनाना है तो आई हैव 0.01 ग्राम वाला स्केल जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, बट अभी तक मैंने बड़ा बैच बनाया ही नहीं है. सो दैट इज़ दैट. आई मीन आई हैव मेड अ बिग बैच. वेट
सबसे पहले मेन रिवील तो वही है। सो ये है दो जो मैंने परफ्यूम बना के रखे हुए हैं। ये अभी मैच्योर हो रहे हैं, मैसरेट हो रहे हैं। मैसरेट हम करते हैं। हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट मैसरेशन, राइट? पीपल कॉल इट मैसरेशन, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली मैसरेशन. It is what you guys do is maturation. Maceration जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास से होके मैसरेट आता है आपका परफ्यूम। वो पूरा कंप्लीट डिफरेंट कंसेप्ट है। एंड मैसरेशन एक्चुअली मीन्स वो एक एक्सट्रैक्शन मेथड है। सो इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट सम नुआंसेस फ्रॉम अ मटेरियल, लेट्स से एम्बरग्री, तो एम्बरग्री सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इफ आई वांट टू extract the nuances, I'll mix ambergris in some alcohol or something else to extract its nuances. That is called maceration. It's a extraction method. फिर इसके हमको बड़ा कर तो ये नहीं दिखेगा ना। सो दिस ये है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, मतलब एक मिनट। बस ओके। सो दिस इज JPG अल्ट्रा मेल का। इसके मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। मेरा जो पोस्ट था रेडिट पे, उस पर भी मैंने डाल रखा हुआ है। तो इस पे मेरे को बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ चुके हैं। एंड इसका मैंने अभी आई थिंक अराउंड कितना ml बनाया है, अराउंड 500 ml है। एंड दिस इज़ TDMS, जिसका आई थिंक अराउंड 325 ml समथिंग है। तो ये दो आई एम गोइंग टू सेल अभी के लिए, बिकॉज इस पे मेरे को बहुत अच्छा रिव्यूज़ आ रखे हैं दोनों पे। दिस इज़ समवन टोल्ड मी दिस इज़ एट ऑन पार विथ ये क्या बोलते हैं, रायन लायन, जो उस पे उसके लेवल पे है। एंड इट वाज विदाउट एनी मैच्योरेशन, इट वाज लाइक वेरी वेरी फ्रेश बैच। तो अभी वो जो मैच्योर होगा, जब मेरा वो वाला बैच जो मैंने ट्रायल के लिए भेजा था लोगों को, इट इज़ गोइंग टू स्मेल वे बेटर देन व्हाट इट इज़ राइट नाउ। तो ये अभी मैंने 7 दिन पहले बनाया था। ये मैं अराउंड 30 तक मैच्योर होने रखूँगा। 30 तो है नहीं, तो 2nd तक रखूँगा इसको मैच्योर होने। फिर इसके बाद मैसरेट होने, फिर इसके बाद आई विल फिल्टर इट एंड देन पुट इट अप फॉर सेल. So if anyone is interested in getting these two, just hit me up. Okay, so let's get into the making part, ठीक है, because it's already too late. We have like 30 minutes up almost. So wait, ठीक है, does not matter much. I'm gonna start with Veramos. ये मैं कोर डीएनए अभी रिवील कर रहा हूँ, जो उसका कोर डीएनए है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स हैं, मैं वो रिवील करूँगा. उसके बाद there will be some point where I won't be revealing those materials. I'll keep them to myself because obviously अगर सब बता दूंगा तो फिर मेरी जगह कोई आके बैठ जाएगा. Hey Kankana, what's up? Welcome to the stream. So रफली अभी मैं 8 ग्राम बैच बना रहा हूँ. परफ्यूमरी ग्राम्स पे होता है. So I'm making 8 gram batch right now. So yeah, let's start. Veramos is roughly 2 grams out of it, the whole thing. 8 ग्राम में ये Veramos ही सिर्फ 2 ग्राम का है भाई. One gram.
I hope मेरे पास enough है because this bottle is about to get. Okay, I have enough. 0.270. Okay, I overdid it slightly by 10 mg, but that's fine. That's completely fine. It's just a trial batch. Just a trial batch. भाई 1 मिनट रुको यार. बिग फैन निंजा. अरे अभिषेक. वेलकम. ये भाई ये सबसे मुश्किल काम है यार, इसको टेयर करना है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे स्पॉन्जी से माउस पैड पे ऐसा ये हो रहा है. Okay. Then there is okay, I have to write price and stuff. Okay. So then there is कैसे दिखाऊं भाई मैं इसको. There is a material called Hedion which smells like jasmine. हाँ ऐसे दिखा सकता हूँ मैं. So okay, this is Hedion जो इसका स्मेल है जैस्मिन जैसा है, जो मिड नोट्स में है इसके. But wait. Let's do Amroxan first. Okay. So this is Amroxan. This is also diluted to 10%. Amroxan smells like, it gives a marine, ambery, vibe. एक ऐसा मरीनी वाइब आता है इसमें. It is more like ऐसा salty towards ऐसा salty side, जो मरीन नहीं बोल सकते, बट मोर लाइक ऐसा सॉल्टी सा जो मेरे को ओशन साइड का याद दिलाता है. इट इज़ लाइक मोर सॉल्टी टुवर्ड्स दैट साइड. ओशनिक जो एक ऐसा जाते हैं हम वहाँ पे, जो एक सॉल्टी सा एक वाइब होता है, वो इससे आता है मेरे को. दिस इज वेरी एम्बरी एंड लाइक ऐसा डिफ्यूजिव. दिस इज द मोस्ट डिफ्यूजिव मटेरियल. सॉल्टी, यस सॉल्टी. Not in the salty way your ex was. Just saying. Hi JK, welcome to the stream, man. Now we have Amroxan, which is 3.357 grams. What? Chalaya? What? I don't know what that means, but okay. 3.3. ये codeine है guys, so like it's like very good. So let me clear one thing. तो ये जो मैं codeine reveal कर रहा हूँ, even if you buy those materials and make your perfume out of it, it will like literally smell like BR540. It will literally smell like BR540 because that's the core DNA. Obviously it is going to miss the depth and everything, but if you make it, it is going to smell like BR540. One more drop. Okay, we are slightly under the weight. Sure. क्या बोल रहा हूँ भाई मैं. Okay, that is gonna good enough. Not gonna try to put extra because I know एक ड्रॉप से मैं ओवर वेट ज़्यादा डाल दूंगा. I mean ओवर वेट हो जाएगा ये. That staying underweight is better than that. So एक ड्रॉप रफली 0.015 mg वेट करता है, तो मैं 3.50 इस पे था. हाई IUC. Okay, then there is ethyl maltol. This material
This is ethyl maltol, 10%. This is also at 10%. This smells like cotton candy और burnt sugar. जो BR540 का कोर जो मतलब जो बेस है उसमें जो एक शुगरी कॉटन कैंडी वाइब आता है, जो मॉसी एवरलीन मतलब जो वेरामॉस है उसके साथ जाता है, वो एक बहुत क्लीन सा ऐसा नोट देता है जो मॉसी, like bit of earthy, and then there is bit of cotton candy going, and it gives a vibe of like being in the nature. I love this material because it is so strong. Like this is just what? This is roughly 2% of the concentrate. मतलब basically if I make a 100 ml batch, it is just 2 ml नहीं होता, but if I make 80 grams of batch which is 100 ml, उसमें ये सिर्फ 2%, only 2%, and it is still very prominent throughout the perfume. Like as soon as you spray it, you will start getting it. It is very, very strong, diffusive, smells like burnt sugar, sexy material. If I could use it in every single perfume, I would. If I could use it in a freshie, I would, because it smells super good. I am a huge fan of sweet perfumes. I don't know why, but अलग ही शौक है मुझे sweet perfumes का. So that's why I love that, burnt sugary candy, vanillic vibe. This material is 0.336. Perfect. 0.034. That's perfect. We are not going to touch it anymore. We are not going to touch it. मैं इसको अभी थोड़ा सा भी ऐसे इधर उधर करूंगा ना, तो wait, it went to 0.036 and then it suddenly, okay. भाई हो जाए यार. Okay. Okay. टेयर ही नहीं हो रहा था. We are done with ethyl maltol. Now we are going to head towards Hedione, which is jasmine like. It gives nuances of jasmine, but it is not actually jasmine. Okay. So थोड़ा jasmine like ऐसा उसमें nuances हैं. It is more diffusive and like ऐसा floral note है ये जो mid में आता है. It acts like a bridge between, let's say there are some few floral notes in your perfume. It acts as a bridge जो transition देता है जो perfume में. It helps like ऐसा smoothen out the edges and everything. तो काफ़ी तगड़ा मटेरियल है. अभी के जो जितने भी परफ्यूम्स हैं करंट, उनमें ऑलमोस्ट सब में हेडियोन होता ही है, बिकॉज दिस मटेरियल इज सो एरी एंड ट्रांसपेरेंट कि even if you overdose this is almost 40% of the concentrate, as in ये 40% है, सॉरी 30% है ये पूरे परफ्यूम के कॉन्सेंट्रेट में. दिस इज अ ह्यूज ओवरडोज. इवन देन इट डज नॉट गिव एनी ऐसा प्रोमिनेंट नुआंसेस. तो इसको ओवरडोज भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ सच अ गुड फ्लोरल नोट. ये बैकग्राउंड में हेल्प करता है, परफ्यूम को डिफ्यूजिव बनाता है, बेसिकली एरी बनाता है थोड़ा. सो आई पर्सनली लव दिस. कौन सा परफ्यूम? baccarat rouge 540, जो मैंने तेरे को बना के दिया था, मतलब तेरे को नहीं बट मैंने जो बना के लाया था, एंड देन योर फ्रेंड्स लाइक्ड इट. दैट वन, एग्जैक्टली दैट वन. grab a pipette, sorry.
This is almost 0.5 grams, half a gram basically. Overdid it by 10 does not matter. टेस्ट परफ्यूम है, क्या ही फर्क पड़े. थोड़ा सा इधर उधर चलता है. when you're making test batches you cannot be 100% accurate. It is impossible to be 100% accurate. And there is I can reveal this one. And then there is Cashmeran, जो इसको लोग बोलते हैं it smells like hay or something, or maybe cashmere wool or something. इसमें मुझे तो नहीं आता है वही vibe. I can only smell musky stuff in this. It is musky cashmere and it reminds everyone of hay. But I don't know. This does remind me of something silky or something like that. Like it's like if we buy a silk का साड़ी और wool का साड़ी, kind of remind साड़ी नहीं sorry wool का कुछ भी ले तो it reminds me of that kind of. क्या खातो का तू खातो का wool की साड़ी नहीं होती. I corrected myself. वुल का मैं कपड़ा बोलने वाला, ये बोलने वाला था, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट. Cashmeran is 0.252 grams. इथं तर सोडलो नाही. अरे माझाच विषय भाई तो. झिरो पॉइंट बस्टर्ड ओडो केळ्याचं बनव सेंट. ये तुला सारतो केळ्याचं सेंट. 0.250. So I'm not gonna touch it here because it is 0.252 off by 0.2 grams. Does not matter. Okay. So this is the core DNA. This is the core DNA of baccarat rouge 540. ये इतना ही. Even if you just pour this few materials, कितने हुए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 material. Even if you just pour this, you are done. It will literally smell like BR 540. Just the opening is not going to be as good as that obviously because हमने top notes में तो कुछ डाला ही नहीं है. एक गुड मार के दिखा. जिस दिन मरना होगा मार दूंगा भाई. मराठी बोल यार, व्यूअर्स मराठी थोड़ी. तो ये कोर डीएनए है. देयर इज ऑल्सो जैस्मिन सांबा. तो वो तो ऑब्वियसली लाइक नॉर्मली अगर कोई लोग बनाने जा रहे हैं तो वो नहीं बना पाएंगे. बट this is what the core of BR540 and Oud for Greatness has. उसका कोर डीएनए यही है. इसमें सैफरनल भी है बट वी स्किप दैट बिकॉज वो टॉप नोट है एंड वी स्टिल गोना गेट दैट. एंड सैफरनल हम डाल नहीं सकते. वी कैन पुट सम ऑरेंज एंड then that will be the core DNA.
I'm gonna dip this one right now. We can remember that this is the base. -40 में क्यों जा रहा है भाई बार बार? यार अभी स्मेल भी नहीं आएगा क्योंकि टॉप में कुछ है नहीं, so I'm gonna let it sit for a while. क्योंकि अभी टॉप नोट्स डाले नहीं है हमने, एंड दोज आर बेस नोट्स, सो सिप पे भी मेरे को अभी बेस नोट डेवलप नहीं होगा बिकॉज जस्ट आई हैव जस्ट डिप्ड इट अ सेकंड अप. ओके, वी फॉरगॉट समथिंग इन द ये बेस, जो कोर स्ट्रक्चर है उसका. देयर इज cedarwood virginia in this, which is diluted down to 1%. मतलब it is 0.01%, 0.1% in the formula. No, it is not 0.1%. Wait. कितना ही है? मेरा कैलकुलेशन गंदा है भाई. It is 0.02%. मतलब 0.020% and the final formula. So, should I do cedarwood Indian or okay, I'm gonna do cedarwood. cedarwood Indian नहीं, सॉरी, cedarwood Virginia. मैंने मेरे फॉर्मूला में cedarwood Indian लिख के रखा है एंड आई डोंट नो व्हाई. और मैं हमेशा, मेरे को ये उल्टा पड़ जाता है बिकॉज आई हैव मेड अ quite a few trial batches of this because I was trying to get it you know closer and closer to BR540. इसका जो मैंने ये कोड ने बताया, इसका मैंने ये बनाया, बना के भेजा था. और उसमें मैंने टॉप नोट्स डाले थे ऑब्वियसली, लाइक देयर वाज बेजल डिएट, saffron, which are top notes. So cedarwood Virginia is not like Indian cedarwood. If you smell Indian cedarwood, it smells a bit medicine, like medicinal, or like उस साइड पे जाता है. It does not smell anything like this. Cedarwood Virginia literally smells like a pencil. You smell pencil and like if you sharpen it, जो smell आता है उसके टाइम पे, it smells like that. A bit stronger, but it reminds you of that thing. Cedarwood Indian is 0.34. So we're going to do 2 drops and we got it perfect. Perfect. 1 minute. So try and get it closer. We might be able to do that. Okay, never mind. I'm gonna leave it to that 0.034. Now here comes the mid note, जो बहुत prominent है, and this is why BR540 gets so much love because of Jasmine grandiflorum. जो मिड में जो ये आता है जब नोट, एंड देन वो ट्रांजिशन जब करता है टॉप से मिड पे, दिस इज टॉप टू मिड नोट. तो जब ये नोट आता है, इट इज़ वेरी स्वीट एंड फ्लोरल, लाइक पीपल लव स्मेलिंग जैस्मिन, राइट? तो ये जब नोट ऐड होता है विद cedarwood एंड क्या बोलते हैं, saffronal, this creates a very warm, not warm, but like it creates a very like subtle and nice, yet as a sweet note, which people love obviously. Like who does not love jasmine? And this material alone, इसमें
ये जो 8 ग्राम का सोल्यूशन है, ये मैंने 8 ग्राम बना के रखा हुआ है। दिस अलोन वुड कॉस्ट अराउंड 600 रुपीज़, दिस सिंगल बॉटल। इतू सा 8 ग्राम, मतलब ये इथेनॉल में डाइल्यूटेड है, इसलिए इसमें 0.8 ग्राम ओरिजिनल मटेरियल है। वो 0.8 ग्राम का ही सिर्फ प्राइस है अराउंड 500 से 600 रुपये। सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इस फॉर्मूला में सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल है अपना एमरॉक्सिन, और फिर उसके बाद आता है सबसे एक्सपेंसिव, दैट इज जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरम एब्सोल्यूट। It is expensive, and making trial batches puts a hole in your pocket. I mean, it's not a lot, but still, I mean, it's just 2 drops. So trial batch में तो इतना नहीं जाता है, but still, it is expensive. Wait, मैं जैस्मिन सैम्बर एब्सोल्यूट का वेट सही डाला था क्या? ओके, सही डाला मैंने। सैम्बर नहीं, सॉरी, ग्रैंडिफ्लोरम। ओ भाई, ये if I put this in a perfume and add a top note, this alone could make a perfume, but it is restricted, so इसका perfume नहीं बन सकता है। Like this can literally alone, like ऐसा, this alone single material can make a perfume, and it would smell so good. I would just add ISO super, this, and um, a top note, maybe orange, because it will give a orange blossom kind of vibe. Okay, perfect. Okay, maybe we slightly underdid it. Done. Now we have ISO super, which is a very famous molecule जो cedarwood vibes देता है, but it is not actually cedarwood. It smells more like wood with some sweetness and some um कैसे explain it? It is ambery, woody, and then there is a lot of sweet, subtle, ये बोलते हैं एकदम, so it is not strong sweet, but it is sweet. It has like a subtle sweetness in it, and I kind of love how it smells because, wait, give me a second, ये नया नया बना हुआ है मैंने। This also does the same job as Hedion. I mean, not in the way Hedion does it, but this material is not very prominent even if you overdose it. There are some formulas which has almost 40% of ISOE super in their concentrate, not in the finished product, क्योंकि ISOE super is restricted to 20% of the perfume. So if we are making a perfume, complete perfume, जैसे molecule O1 है, it is only made out of ISO-E super. Basically ISO-E super नहीं है उसमें, ISO-G super है, which is a captive material जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स ही यूज़ कर सकती हैं, हम जैसे गरीबों के पास देखते नहीं हैं। तो दे विल लाइक, तुम्हारी मराओ, हम ISO-E super, आप ISO-E super ही रखो। There are a few materials which smell stronger than ISO-E super and go close to ISO-G super, but none of them match that quality, you know. That's why molecule O1 is very famous. If you have read about it, it is very famous outside India. It's literally a single molecule. Usko people use it to layer it with some perfumes because it is diffusive and everything. We did cedarwood, right? Yeah, we did it. So we're on ISO-E super right now. It is also 0.034 grams.
टू ड्रॉप्स वन. अरे यार ये कम हो गया. टू. ओके. ओके. गुड एनफ. गुड एनफ. अबे यार ज़्यादा. ओके नो माइंड. ठीक है थोड़ा ही ज़्यादा हुआ है. दैट्स फाइन. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. That's fine. It is not going to overpower the formula because it is just at 1% and that is barely noticeable. Like if someone tells me they can smell ISOE super in this formula, I would literally touch their legs and everything. I would literally fall in their charno. Whatever. Like it is so subtle, no one can notice it. It is just there to create a bridge, a nice bridge between uh, cedarwood, Virginia, and as a materials. Like it acts as a bridge between these two materials, create to just create a little smoother. It's not even this a huge impactful material because it is at 1% dilution, and even in the original formula, it is at 10% dilution. So I highly doubt anyone can smell it. I highly doubt. Okay. Okay. I'm gonna do one material, last material, which I think I can reveal. Okay, no. I still have two materials which I can reveal. Okay, wait. How about we dip? Since we have added a lot of materials after. We have added quite a few materials which are mid notes. Let me dip. Dip a dip. Okay. I can barely smell anything right now. I'm gonna let it rest. And the cedarwood. We added cedarwood. Now it's time to add citramber. This is citramber. आजा भाई फोकस में. या स्पेलिंग गलत है. इट इज CEDRAMBER बट ओके. It is at just 0.2% of the formula. एक second देना guys. This is a newly created bottle, so it's kind of stuck. Here we go. Two drops, just two drops. My God, first drop was so light. बदले भाई. Okay, perfect. Perfect भाई. Literally perfect. ये देखो परफ्यूम्स के फॉर्मूलाज इतने ये होते हैं कि भाई इसमें इतने कम क्वांटिटी में मटेरियल जाते हैं. देयर आर लिटरली लाइक ऐसा bridges. They are just bridges. They are just there to add some depth. They're there to like just create a bridge between two materials. They're just to mm, just ऐसा soften out the harsh
edges which some materials have. It's just there to do that stuff. इस इतना इतना छोटा क्वांटिटी में कोई कोई मटेरियल हाई इम्पैक्ट नहीं लाने वाला है. देयर इज नो वे any material is doing that. Okay, we have some Veramos which is stuck. Okay, we still have to pour some uh, alcohol, so it does not impact anything much. Okay, now what do we do? What do we do? What do we do? Okay, so there is this material called safranal, which is obviously very prominent in the top. It is a huge impact material. Safranal is diluted down to 1% just for the trial batch. Original formula में ये नहीं है. 1% पे नहीं है. It is at 10% in the original formula. ये मुझे सैफरन कम कैम्फर phenolic metallic kind of vibe देता है. I don't know why how this smells anything like kesar, but when we put it in there, it somehow turns into kesar. I don't know. ऐसे normally smell करने में it smells like camphor, literally camphor. One drop. That's all. One drop and a splash. Yes, perfect. 0.17 था. 0.17 ही गए. Now we can do orange, जो ये मैं रिवील करने वाला हूँ. Orange तो obviously है इसमें. Point 100 gram. Plain old orange oil. Smells like orange peel. Literally orange peel. And I love it. Look at the color, man. Look at the color. Wow. This is what? 0.100. एक 4-5 ड्रॉप होगा आई थिंक. 2 3 4 5 6. ओके नाउ मैंने 6 कर दिया. But we are still at the perfect amount. We still need a bit. बढ़ जा भाई. Splash, 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 splash. अबे अंदर मटेरियल जा रहा है, बढ़ नहीं रहा. What the hell? लीव इट योर. मैं इतना नहीं बकचोदी करने बैठने वाला भाई. टक 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 कर रहा हूँ उसको. जा नहीं रहा भाई वो. Now this is BR 540 complete. If you smell this, if you make this without any more materials, I still have what, 1 2 3 4 5 6 7
Still left with seven more materials. But if you make this much, just this much, this is going to smell like BFF. Like literally, koi, if there is a person who is untrained, who has untrained nose, he is going to like fall for the scheme, obviously. Like, so, hmm, there we go. अबे हो जा tear. I'm going to dip over here as well because okay, there's one more material which is left to add. Um, that I'm gonna do, and then I'm gonna dip. There is benzaldehyde, which is only in B baccarat rouge 540 extrait version. It is not in BR 540, just the normal BR 540. So so um we have benzaldehyde at 10%, only one drop. Imagine, just a drop, just a fucking drop, and we are perfect. Perfect 0.016. I'm not gonna play around for one. Not gonna play around for one. यार मेरा ये माइनस में जा रहा है पता है because of the weight unbalance. We also did jasmine sambac. We also did orange. Now we are only left with one, two, three, four, five, six materials. Last six materials which I am not going to reveal. So all of them are at a very wait. Huh, okay, fair enough, fair enough. I thought I overdid something and I had to dip. I had to dip. Already smells like BR 550. Literally BR 550 है भाई. जो इसमें जब सैफरन डल जाता है आई डोंट नो व्हाट इट डज लाइक इट इज लाइक इट जस्ट चेंजेस द वे इट स्मेल्स लाइक ऐसा स्कैंकी स्मेल होता है फिर उससे अचानक से दिस जस्ट टर्न्स आउट टू जस्ट अ फिनोमिनल सेंट ऐसा पता नहीं कैसे there's some magic. We have dihydromercinol now. Fuck, I revealed. Never mind, does not matter. एक ही रिवील किया ना बाकी के तो नहीं किए. I'm not gonna reveal others. Not gonna make that mistake. This is just one drop. One drop. Hmm. I'll add some greenness, some citrusy vibe to it. That is all what it would do. Then we have something, something which I can't repeat.
भाई यार ये पता नहीं क्यों माइनस पे जाया जा रहा है. देयर इज सम reason this keeps going in minus, and that is kind of irritating. माइनस पे मत जा भाई. आई मीन आई नो अल्कोहल डिसिपेट हो रहा है बट सर. One full drop. Hmm. Very close. What do we have now? Well, you smell है भाई इसका. I absolutely hate this. Every single time I smell this, I hate it from my core. But इतना याद रखो गाइस, कोई भी परफ्यूम बनाओ, कोई भी परफ्यूम, unless it does not have something dirty in it or something which is uh, like it would make you go like something like that. The perfume does not become a perfume. Somehow the dirtiest materials make the perfume smell super good. They are in very small quantities, like absolutely very small quantities, but somehow they just completely change the way perfume smells, and this is that material. 2 drops of this. You would need one more. Hmm. This is the other material which also smells like dog fur. As um, if you give your dog a shower, that is how this material smells. But this is not as bad as the other material. I would still like this because it still has some musky facets to it, and it is kind of on the sweeter side. So I would still like this over that one any day. We have this the same amount. What? इतू सा ड्रॉप ऐसा. Hmm, better.
Try to be as close as possible, भाई. क्या है ये? Wait, did I tip? Yeah, I did. Now we have two materials which are at such a low quantity. I don't know if I would make it because इतने कम है क्वांटिटी में, क्या ही बताऊं. वेट, सो व्हाट आई वुड डू इज, पहले मैं ये वाला मटेरियल डाल देता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं ये दोनों डाल दूंगा. सो थोड़ा मेरे को आइडिया आ जाएगा. देयर इज डीपीजी which is also a lot in this, considering this does not smell like anything. It does not have a smell. It is literally a solvent which you use in attars or just to mix your, like, make your dilutions. 0.47 478 close. One more. We are done. ज़्यादा ही हो गया, ठीक है. 3 mg ज़्यादा है, so not a lot. There is still some stuck in the pipette, but okay. अब ये दोनों मटेरियल इतने कम क्वांटिटी में भाई. There is one material which smells like banana and apple. Can you believe it? That a perfume, that a perfume which does not list any sort of apple or banana sort of thing in their fragrantica notes. It has it somehow. One, two, done, done. भाई perfect amount. And there is one more material which again smells like banana, apple. Uh, no, this is more on the leafy, maybe watery side, maybe some melon, bit of fruit. There's some, yeah, there's some fruity facet to it. Like this sweet, a bit fruity. हम्म, ये बॉटल खोलने में मेरे नाखून टूट जाएंगे भाई एक दिन. ये नहीं जाने वाला यार. गया. बढ़ जा. बढ़िया. Right. I'll overdo this by a slight. Okay, perfect. Done, guys. We are done making beer. Let me grab some alcohol. Okay. हमने डीपीजी भी डाल दिया, सब डाल दिया. अभी हमारा लास्ट डिप करना बाकी है. There's only one dip left, and we have to add some alcohol to it to make it a 8-gram batch. We have to add 0.682 grams of alcohol.
Wait. Okay. अरे यार. No. Okay. I thought I overdid it. जो साइड साइड में चिपका हुआ है. I have to get it out. Done. Yeah. Overdid it a bit. But क्या ही कर सकते. क्या ही कर सकते हैं. So this is our baccarat rouge 540, the ultimate version, which is my last alteration. Oh, there is some kida in this. Wow. So some stupid fucking fly decided to fall in this. Great, right? मतलब I understand like कि तुझे sweets पसंद है, but like not everything that smells sweet is good, you know? I mean, to dip yourself in it. Fuck, sexy, sexy, sexy way. Now I can pick up the top notes, but as of now, orange is very prominent. Then there is benzaldehyde, which is bitter almond note. Benzaldehyde is bitter almond, जो पिरामिड में डाला हुआ है. Nice. I'll let this rest for few minutes. That's one. And we are going to smell our dip, which was done when we added benzaldehyde. Actually added benzaldehyde, and we did not have anything else. Hmm. Wow. Cedarwood. I can pick up cedarwood, which is in very small amount. I don't know how, but I can. Then there is obviously there is Amrox and Hedion. Hmm. Jasmine Sambak जो आ रहा है भाई इसमें. I swear to God. I can I can't stop smelling this. Jasmine Sambak नहीं sorry. इसमें है Jasmine और Reticulum Absolute. Sorry, Grandiflorum Absolute. जो आ रहा है भाई. क्या ही बताऊं. ओहो. एक सेकंड. ये मेरा माइक. जैस्मिन जो आ रहा है. आई स्वेयर. आई लव इट. ये दूसरी बार मेरा गिर गया.
तीसरी बार. But somehow this is my alteration which has the strongest amount of jasmine samac sorry, jasmine grandiflorum absolute. It is there and it is very very prominent. पहले जो मैंने अल्ट्रेशंस बनाए थे 3 या 4 बनाए थे मैंने आई थिंक विच आई सेंट आउट फॉर टेस्टिंग एंड सम गाय टोल्ड मी इट स्मेल्ड as good as some brand I don't know, but it is very prominent and it smells breathtaking up like god. Wow. Then we have my a dip which actually had cedarwood added. We added jasmine sambac and cedarwood. इसमें cashmere आ रहा है. We added cashmere and cedarwood, pencil sorry, क्या बोलते हैं, cashmere and jasmine sambac absolute डाला था हमने. And there we also added isoe super which I can't smell it. I can't smell it. Every single time I've added it, I could not smell it. There is no way I can pick it up. Like it is literally one drop at 1%. So, but इसमें भी I can smell jasmine sambac absolute at the very top because it is almost 20 parts per thousand, and jasmine sambac absolute is very very strong. It will last for 300 hours on a smelling strip if you dip it in it. And hmm, I can pick up some cedarwood, but it is not very prominent. I think it would start being getting prominent after some maceration, because obviously this is a newly made formula and it will need some time. Hmm, nice. And this is the last strip. Display. We added Amroxan. We added what did we add? We also added. We did not add Cedram at the time. We added Amroxan, Veramus, ethyl maltol, Hedione, and Cashmeran, I think. Hmm. Very easy to pick it up. Like Veramus, ethyl maltol, and then obviously Amroxan. Very easy to pick up. Hmm. I just love to try it out. I am a huge fan of BR540. I don't know why people hate it, but I absolutely love it. Like from my core, I love it. I don't know why people don't like it because people say it's sweet, but it is literally not sweet. If you try sweet perfumes, I don't think you would call this sweet. There's no way this is sweet. The dry down and like base note on point. I have skipped one material in this, which is fur balsam absolute, which was at 0.001 grams of the formula. So I don't think anyone would be able to pick it up. So even if I skip it, I couldn't source it. So can I say what can I do? But the way it smells is amazing. Just 19 materials, just 19 materials, and it smells absolutely. This is our top.
Oh, I can pick up one of those materials which are, hmm, it is prominent, yeah. Wow, I did not expect that. Can pick it up, but it smells nice, not in a bad way. I did not expect that. I started picking it up in this one as well. Hmm, it is there. The second dip is very prominent in the top one. बेस यार, बेस जो है इसका, बेस बेस जो है भाई, जो 2 घंटे के मार्क के बाद का जो इसका जो हार्ट और बेस नोट जो सर डेवलप होना स्टार्ट होता है, I swear, प्यार हो जाए भाई इसमें. आई हैव रिड्यूस्ड ethyl maltol because my original formula which I made had 4% of ethyl maltol in it. This one has only 2% because someone told me it was way too prominent and it kind of ruined the base DNA of the original, obviously. And I am trying to make it as close as the original. So इसमें कम है. It does not it does not come on your face like, oh, that sounds wrong. It's not on your face. It is there in the background doing its job to add a bit of sweetness. Veramos Veramos जो material है, it is supposed to have some more depth, but it is still somehow mossy and green, but it lacks that depth. I wish I could add oak moss absolute instead of this, because I have oak moss absolute, but it is restricted. So there's no way I can add it. But if you smell Veramos and oak moss side by side, you would realize that oak moss smells heavenly. But still, I love this. Hmm. I have now started picking up marigold, which is the Jeets. तू कुले अच्छी थी मम्मी एवर यार, तो कुछ ना चंदर. It is now started to develop. I think it would this formula would smell way better because this is just pre-made. Sorry, this is just made like literally 10 minutes ago, and I still can like I said, imagine where it would head after some maturation and everything. It would smell absolutely fucking. I think I'm going to finalize this formula because we are going to launch BR540 in my lineup in the launch phase. But I don't think we'll launch it right now because it's summers and no one is going to wear this in the summers because
You can wear it at night. I mean, it's a very airy and like it is not heavy. This perfume is not heavy. Some people find it heavy. Like, come on, bro. कभी खामरा पहन लो भाई. हैवी तुम्हें समझ आएगा. कभी ऊद वाला परफ्यूम पहन लो. ये हैवी लग रहा है भाई. दिस इज नथिंग ब्रो. दिस इज सो एरी एंड सो नाइस. इट विल लिटरली प्रोजेक्ट 10,000 kilometers away. Exaggerated, but still, you know what I mean. Hmm. Tajid's इसमें अभी आने लगा है. It smells so nice. Does not smell bad. Hmm. I skipped Tajid's in my original formula because when I smelled it raw, I thought it would smell dirty, but it smells nice in the formula. Hmm. I like it. I like this formula. I'm gonna let this rest for a few days, maybe a week or so, and then I'm gonna revisit it, test it out a bit, see how it turned out. अभी तक काफ़ी सारा डसे पे ये भी हो गया होगा यार, उड़ गया होगा, बट स्टिल जैसा अभी है, आई लव इट. एंड द थिंग इज आई हैव सब्स्टिट्यूटेड फ्यू मटेरियल्स. इसमें ऑरेंज ऑयल जो यूज़ किया मैंने वो नॉर्मल वाला यूज़ किया. इस पर ऑरेंज ऑयल 5 fold यूज़ करना है, विच इज़ 5 times stronger than normal orange oil जो मैं अभी यूज़ किया. So I guess this will smell way better after I add orange oil 5 volts. But अभी जैसा है, it does smell nice. I'll shake this for a bit. Like literally ऐसा without any maturation, just 5 minutes, and it smells super nice. Hmm. Jasmine is kind of strong right now, but I think it will tone itself down after some time, after some, 10-20 days of period. Because the thing is, jasmine natural materials do tend to be very sharp when they are poured in the formula as a, like literally abhi. So it'll take some time. It'll take a good amount of time to just settle itself down, and mix with other materials properly. But yeah, it does smell like jasmine grandiflorum right now because बहुत strong है. And I've started picking it up in every single strip like which had jasmine sambar. इसमें भी है, I think. नहीं, wait, my nose is playing games with me. नहीं, इसमें नहीं है. Abby, nice. एक मिनट guys. Hello. Stop. I can't stop smelling this. I somehow just love the base. It is so good.
इसमें है एक्चुअली जैस्मिन, या मैं इतना स्मेल किया ना अभी, and this thing is also literally like projecting right now, so my nose is playing games with me right now, but whatever I'm smelling it is. Hmm. I did not expect Tajid's to be so prominent because it is just 1%, 0.1%, but it is still, I guess, still pick it up because I know that like funky smell and I can pick it up. Hmm. Very strong material. Okay, that's it, I think, for today. Uh, I've already streamed for 1 hour 41 minutes. I did not plan to do that. I was expecting this to be over in what, 40 minutes, 30 40 minutes. But me being the yapper, चपाट 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 करने की आदत है, उसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया. क्या रे आयुषी भाई, जो जो स्मेल है भाई इसकी, चपड़ चपड़ तो करते हो, एंड क्या इसमें there is a lot of there is a lot of alcohol smell right now still in this. स्मेल कैसा करा, बहुत बढ़िया. ये वही कर रहा हूँ मैं. It smells the way it did when you sniffed it. I mean, it was way sweeter back then, but अभी sweet नहीं है उतना. Hmm, ठीक है. I love this one, and okay. I think I'm going to finalize this. Describe describe नहीं करूँगा मैं. अरे बहुत ऑयली है पता है ये परफ्यूम. दिस परफ्यूम इज वेरी ऑयली बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ डीपी. It literally sticks, but it smells good, so I don't give a flying F. Give me a second, guys. So, this is what? Test formula number 12? Yeah, I think so. Test 12. PR 540. This is the 12th time I'm making it, I think. पहले 6 बार में तो I think I fucked it up. Okay. ओ हो भाई साहब, बहुत ज़्यादा उड़ गया भाई. ये जो पकड़ पकड़ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा उड़ गया ये फॉर्मूला. इट वाज सपोज टू बी अराउंड ओ हियर, around my middle finger, like it was supposed to be. A lot of just went in the air, but does not matter.
Got the cap and everything. Here goes the sticker. Okay, this is our BR5 for the test batch number 12. And I think we have got it down this time, like, perfectly. I'm gonna keep this beaker unwashed so I can smell it tomorrow or right now. I'm gonna keep it unwashed so I can, like, kind of analyze it, because this is the best way to analyze a perfume. So once you've done making a test batch, I like to keep it, like, this is the way I find to be the best, because once I spray it on the test strip, I dip it, uh, it is not going to dissipate, it is not going to project the way I want it to. But since it is in the yeah, glass bottle, it is going to dissipate faster because it does not have anything to stick onto. Um, Paper can absorb a bit of it, so it will take some time. So this is the best thing. So it will project the best. I'm gonna use this, but I love the way it smells. I think I have to let this sit for a good while, because this time this formula has a few naturals which it did not have before. So this would take a lot of time to mature. So I think I'll let it rest. And I might swim tomorrow or maybe day after for um, Creed Aventus. We're gonna make Creed Aventus tomorrow or day after. Mm, no, I don't think we'll make it tomorrow because I'm kind of busy tomorrow. So it's day after. Yeah. Who knows, if I get some time, we might. So that's it, friends. Thanks for tuning in. जो भी आए थे, I liked it a lot since you guys, like, showed up. Uh, it means a lot. I mean, even if you guys show up for like 2 minutes and just leave a hi, that would mean a lot to me. So yeah, thanks for joining. See you in the next stream.